Dear students, now start the third portion or lesson of the ninth class history, third chapter, Nazi and the rise of the Hitler. The name of this portion is the Nazi Worldview. It means the approach towards the world and towards the world political, social, economic order of Nazis. Worldview means विश्व दृष्टि. It means किसी को का दुनिया को देखने का नजरिया. According to him, what kind of relation they want to conceive or admit between them and the world. So the Nazi ideology was not just different from the Hitler's worldview. The Hitler's worldview and Nazi ideology both are the two sides of a coin. According to this, there is no equality between the people. Hitler's and the Nazi, Hitler or the Nazi believe that the equality among the peoples is not very natural. They think that the racial hierarchy is a natural process. The racial hierarchy is natural because they believe that the blue, blonde-eyed Nordic German Aryans are the top human beings and the Jews are the lowest. This is the highly discriminatory ideology among the human beings, and they adopted this anti-race and arch enemy of the Aryans or the colored peoples are not as human as they conceive according to their external features. They borrowed these things from the Charles Darwin ideology and Herbert Spencer. Charles Darwin provided the theory of the evolution and the natural selection, and Herbert Spencer added with the survival of the fittest. But these are natural phenomena. These are made by the natural process. A species survival on the earth, adopt themselves, changing climatic conditions, and there bear the mind with the Darwinists that not never advocate the human intervention regarding this evolution. This is purely the natural process. But deliberately, Hitler had adopted this natural phenomenal theory for their political vendetta and their political mobilization. And he used to intervene or use deliberately the theory of the Charles Darwin and Howard Spencer that justify that the nature had decided the rule that the strongest have a right to rule on the weaker. So we are the human being, and we are as a human being of the highest superior race called Nordic Aryans. So we have a right to rule over the others. They are weaker or would to be perished. But this is a political blunder. It is highly fake kind of intervention of scientific theory, because the evolution of fittest of the fittest, the evolution of the human being or evolution of any creature or living organism, it is totally natural process to who will be the survivor and who will not survive. But Hitler's that's just taken the task of the nature and will decide that I will decide that I am the superior, then others are inferior, and so we have a right to rule over the others, and the others have to be perished, whatever made by me or by the nature.
So this is a totally a mishandled theoretical concept, but it made by very scientific and organized way and get the public attention. And also, he have given the economic theory that Lavastrom, the living space, and he have adopted the theory that the new territories should be acquired for settlement of the German peoples and attached with the mother country and enhance the material resource of the power in the German nation. So this ideology emphasis or this ideology uh, just given a push up to the Germans or Nazis to adopt the strategy to conquer the boundaries and the other countries and exploit their resources with the benefits of their own. So is the first and the immediate victim of its expansion was become uh, as a very concentrative German geographical space by the Poland, and Poland became the experiment laboratory of Hitler, and this was the most dated land that Hitler have adopted this inhuman or heinous task or act. Point 3.1, the establishment of the racial state. We just know that he adopted the strategy that no human beings are equal, so there is no right to be demand of the equality. So they have, or Hitler had decided the two kinds of peoples that called one is the desirable and another is undesirable. Desirable peoples have a right to uh, what kind of public facilities, government assistance, and etc. etc. But undesirables have no right. They have to live on the mercy of the uh, desirable peoples. The Nazi wanted only the societies should be given the pure and healthy Nordic आर्यन. समाज को जो है वो प्योर और हेल्दी आर्यंस लोगों के द्वारा ही चलाया जाना या उसी को सुपुर्द कर देना चाहिए. So that the concentrated and considered they are the desirables only one and others are undesirable. Even the peoples who belong from the German Nordic Aryans, but they are abnormal, they are, it's maybe called handicap mentally or physically, they are to be addressed as a euthanasia program to just supervise their healthy as a mental or physical level. If they are considered not physically and mentally fit, they are to be sent to or they are put up in the undesirable section. And Jews were the not only the community classified as undesirable, but there were many, just like gypsies, uh, blacks, uh, racial inferiors, called them biological impurity of widely persecuted. They have to crushed and exploited. It is a very interesting that Russian and the Poles are called to be the subhuman. They are not considered even human also. उन्हें वो इंसान भी नहीं मानता था. And that German occupied the Poland, the part of Russia, captured the civilian, forced work within the labor camp. जब उसने इन एरिया को कैप्चर कर लिया तो दिस पीपल्स हैव कॉल्ड अ स्लेव एंड सेंट टू बी द लेबर फोर्स एंड डाइट सिंपली थ्रू द हार्ड वर्क एंड स्टारवेशन. उन्हें खाने के लिए कुछ नहीं दी जाती थी और केवल भूख से वो मर गए. एंड ज्यूज रिमेंटेड द वर्स्ट सफर कम्युनिटी ऑफ द नाजी जर्मनी. ज्यूज जो है तो सबसे ज़्यादा बुरी तरह से प्रभावित और कम्युनिटी थी तो ज्यूज थी, बिकॉज ज्यूज आर मोस्ट हैटेड बाय द हिटलर्स एंड the peoples, because the traditional Christian hostility according to the Jews state that the Jews are the clear of the Christ. You know that uh, Christ means prophet Jesus Christ, जिसमें प्रोफेट जीसस क्राइस्ट को क्रूज पे चढ़ाया गया हो. तो जिस धर्माध्यक्ष जिस कम्युनिटी के लोगों ने उनको ये पनिशमेंट दिया वो ज्यूज कम्युनिटी के थे, इसलिए ज्यूज को प्रॉफिट जीसस का किलर मानते हैं, ठीक है ना. एंड क्राइस्ट एंड यूसेस
और इसकी वजह से अनटिल द मिडेवल, ये तो समझ ही सकते हैं, यूजर्स द मनी लैंडर्स केयरिंग द एक्सपेंसिव इंटरेस्ट ऑफ द, आगे चलकर बाय द रिलीजियस टर्म द एंड रिलीजियस orders, commandments, or doctrines. The Jews are banned to be possessing of the land and property and cultivating or engage in agriculture. So the majority of the Jews are being adopted the trade and business and become the money lender and separated market area called the ghettos. वो एक अलग जगह रहते हैं, घर के टूस कहते थे, प्रोसिक्यूटेड थ्रू द पब्लिक ओरिएंटेशन एक्सक्लूसन, उनको दूर किया गया, उनकी प्रॉपर्टी उनसे छीनी गई, जो आगे चलकर उन्होंने प्रॉपर्टी ऑन करना शुरू कर दिया था, लेकिन खेती उन्होंने कभी नहीं किया। एंड हैट्रेड टू बी यूज वेयर बेस्ड ऑन द स्यूडो साइंटिफिक थियरीज, जो कि एक छद्म वैज्ञानिक, स्यूडो साइंटिफिक मतलब एक छद्म वैज्ञानिक, नकली फेक वैज्ञानिक थ्योरीज पर आधारित इनके ऊपर अत्याचार किए गए। और नो सोल्यूशन फॉर द ज्यूज प्रॉब्लम, उन्होंने कहा कि ज्यूज का प्रॉब्लम का कोई समाधान नहीं है, एक ही समाधान है कि द टोटल एलिमिनेशन, यानी कि उनको पूरी तरह से उनकी हत्या कर दी जाए, उनको ख़त्म कर दिया जाए। तो फ्रॉम 1933 to 1938 नाजी terrorized and pauperized the segregated Jews, Jews लोगों को आतंकित करना, उनको गरीब बनाना, उनकी प्रॉपर्टी उनसे छीनना, और ताकि वो कंट्री छोड़ के चले जाएं, तो लीव द कंट्री। नेक्स्ट फेज था कि 1939 to 1945, इस फेज में दे हैव टू सेंड टू द कंसंट्रेशन कैंप एंड इवेंचुअली एंड किलिंग इन द गैस चैम्बर। उन 3 फेज थे उनके, जो हम आगे देखेंगे। द रेशियल यूटोपिया देखें हिटलर का, Hitler was a highly racial person, and his schedule to the war, Hitler proceeded to realize their murderous and racial ideal। लड़ाई जब फर्स्ट सेकेंड वर्ल्ड वार शुरू हो गई, तो साथ ही साथ वो उसने अपना हत्यारी और नस्ल भेदी नीति का भी प्रयोग करना शुरू किया। जेनोसाइड में नरसंहार बड़ी संख्या में शुरू हुआ। एंड ऑक्युपाइड द पोलैंड, पोलैंड को उसने ऑक्युपाइड किया, डिवाइड किया, एंड मच नॉर्दर्न पार्ट ऑफ द पोलैंड एनेक्स टू द जर्मनी, जर्मनी के हिस्से में पोलैंड का मैक्सिमम नॉर्दर्न पार्ट को मिला लिया गया। एंड देन फोर्स टू लीव देयर होम्स एंड प्रॉपर्टी बिहाइंड ऑक्युपाइड जर्मन्स एंड ब्रॉट टू बी द ऑक्युपाइड यूरोप। और पुलिस लोगों को मजबूर किया गया कि वो अपनी प्रॉपर्टी और अपनी ज़मीन छोड़ के भाग जाएं। पुलिस वेयर टू बी हर्डर्ड, और पुलिस लोग जो कि एक भीड़ की तरह से अपने बचे हुए क्षेत्र में, जो दक्षिण का भाग था, दे आर जस्ट लाइक ए कैटल, दे हैव टू बी पार्ट ऑफ द जनरल गवर्नमेंट। एक जनरल गवर्नमेंट बना के उसके रहमो क्रम को छोड़ दिया गया। एंड जस्ट डेस्टिनेशन फॉर द ऑल अनडिजायरेबल, जितने भी अनडिजायरेबल्स लोग थे उनको इस पोलैंड की साउथ इलाके में भेज दी जाती थी। एंड मेंबर्स ऑफ द पुलिस इंटेलिजेंस या मर्डर, पोलैंड के जितने भी पढ़े लिखे लोग थे, जो बौद्धिक लोग थे, उन सब की हत्या कर दी गई। और पोलैंड को पूरी तरह से इंटेलेक्चुअली और स्पिरिचुअली गरीब बना दिया गया, स्ट्राइक समाप्त कर दिया, यानी कि वहाँ के जितने भी पढ़े लिखे लोग थे, धार्मिक लोग थे, उन सब की हत्या कर दी गई। एंड police children were looted, like RNs were forcibly sanctioned, the mother executed for the race expert। पुलिस बच्चों को उनके माँ बापों के गोद से छीन कर और उनको आर्यंस को, लोगों को सुपरवाइज करने के लिए दे दी जाती थी, उनको जांच की जाती थी। अगर वो रेस एक्सपर्ट लोग पाए गए कि ये बच्चे नाइन नक्स से आर्यंस की तरह दिखते हैं, सो दे गिव टू द आर्यंस फैमिली, जर्मन फैमिलीज, एंड देयर मदर फादर हैव टू बी गिवन टू द orphans and perished to be the large ghettos, and the general government should strive for. But after all, this was a very heinous nexus for exploitation and destruction. Exploitation word is not appropriate for it. It's totally a genocide, is a planned murder of particular ethnic cleansing. And this cleansing was being, has a 3 stages historians decided. First is the exclusion stage, from 1933 to 1939. Among these stages, the German's government has, or Hitler have boycotted the Jewish business, exclusion of the government services,
and forced to selling their and confiscated their property, उनकी property जब्त कर ली, ना उनको force करना कि country छोड़ के चले जाए, उसके बाद भी नहीं गए. The next stage was to be the Ghettoisation. It is the stage of 1940 to 44 to have the right to live among them. उन्हें अधिकार ही नहीं जीने का, उनकी प्रॉपर्टी उनसे छीन ली गई, उनको सरेंडर करने के लिए कहा गया, उनको बुरी तरह से प्रताड़ित किया. उसके बाद भी अगर कोई यहाँ से नहीं गया, despite the people not to be agreed to leave the Germany, then there's a final stage called Annihilation. It means they have to be sent to the gas chambers to kill them. The live wires, they have to live wire. The clothes of the people, they were gasified. And this is the fencing area of those people who have to send there. And these are the shoes and the slippers of those people who have guessed. गैस चेम्बर में इनको मार दिया गया डाल के. It was a highly heinous genocidal act made by Hitler. Next phase we will take the next chapter. Thank you.